the first remark in that one. If imaginary part is 0, then we got here z is equal to a, and this one is said to be the purely real complex number. Similarly, in second case, if this b is equal to 0, means if if real part is equal to 0, then we got here z is equal to ib, and is said to be the purely imaginary complex number. Okay. त्यानंतर आपण पाहिलं याच्यामध्ये ज्यामध्ये दोन्ही 0 असतील, रियल as well as imaginary, then you got the complex number z is equal to 0. So 0 is nothing but complex number. We can write 0 as the 0 plus 0 I is there. Okay, it is a 3 remarks on the basis of definition. Now we proceed to the next part. याच्यानंतर आपण पाहिलं 1 minute. याच्यानंतर आपण काय पाहिलं ते बघा. Okay. Then afterward, we have seen here some definitions of that one. That is nothing but it is here. This is a complex number. It is a remark of that one. It gives the purely real complex number. It gives the purely imaginary complex number. It gives the zero complex number here. Then afterward, next thing is that after definition we see the next bit is nothing but it is our conjugate of complex number. So here now what is meant by conjugate of complex number? Here now next bit अपन देखें इसमें conjugate of complex number. Conjugate से पहले अपन देखें equality of two complex number. Equality of two complex number. So what is the bit here? Two complex number. Whenever the two complex number are equal, means here a plus ib is equal to c plus id. When the two complex number are equal, then condition is that real part of first complex number is equal to real part of that complex number. So we got here a is equal to c is there. Similarly, imaginary part of that complex number is equal to imaginary part of that complex number. That is, we got here b is equal to d is there. Actually, it is ib is equal to ib is equal to id. So in this one, imaginary part I gets cancelled, b is equal to d is there. So it is important one. Equality of two complex number means whenever two complex number are equal, then what will be done in that case? Here the real part is equal to real part of that complex number. Similarly, imaginary part of that complex number is equal to imaginary part of that complex number. So we got here a is equal to c and b is equal to d square. Then afterward, next bit that we have seen in case of here, it is nothing but which is of this form. Here now. Next form is nothing but conjugate of complex number. Next form is the conjugate of complex number. So what is meant by conjugate of complex number? If there is a one complex number is given to us, if there is a one complex number, it is nothing but it is of this type. If there is a complex number z is equal to a plus ib is there, then the conjugate of that complex number is denoted by z bar. It is obtained by a minus ib is there. So in that case, what we have to do here, whenever we have to find out conjugate of complex number, then we have to take the opposite sign of imaginary part. If imaginary part plus, you take a minus. If it is minus, you take a plus here. म्हणजे कसं? अजून example घेतो. -2, -3 is a complex number. What is the conjugate of that one? Conjugate is denoted by bar. Z च्या डोक्यावर bar म्हणजे conjugate. The conjugate means what? Real part remain as it is. -2 remain as it is. We have to take the opposite of only imaginary part. Imaginary part is a -3i. If it is minus, we have taken here plus 3i is there. Okay. So in that one thing is you have to remember here. While finding the conjugate, the real part remain as it is. We have to only change the imaginary part of that one. Imaginary part मध्ये सुद्धा कसं? जर तो प्लस असेल तर मायनस घ्यावं लागेल. If it is minus, you have taken the plus here. Okay. Now after conjugate of complex number, we have seen the next bit is a उसके बाद कौन सा बिट देखे अपन ने? नेक्स्ट बिट देखे अपन ने अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. यहां तक अपन ने देखिए थे. अब अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में भी बहुत सी थिंग हो गई. सी है ना अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में व्हाट आर द थिंग्स दैट यू आर टेकिंग हियर. So in case of algebra of complex number, there are 4 things are there. First one is the addition of complex number. Second one is subtraction of complex number. Third one is the multiplication of complex number. Fourth one is the division of complex number.
And fifth thing is the multiply complex number by scalar. स्केलर मतलब एकाधिक नंबर से कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करना, ये भी इसमें आता। तो देखो सबसे पहले फर्स्ट बिट इज द एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, ये अपन देखें एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये अपन डिटेल में देखिए, इसको कोई देखने की जरूरत नहीं। इसमें क्या है, whenever two complex number are given to us, there is the first complex number z1 is equal to 4 plus 3i, and there is a complex number z2 is equal to what we can say that here minus 3 minus 5i is there, and we want to add these two complex numbers, so we can write here z1 plus z2 is equal to first complex number 4 plus 3i, then plus second complex number minus 3 minus 5i is there. So what happens now, while doing the addition of two complex number, what we do here, real part is add with the real part, imaginary part is add with the imaginary part. So what happens now, real part 4, here real part minus 3, 4 minus 3, you got here 1. Now 3i plus minus minus, म्हणजे 3i मधून 5i गेले, it is nothing but 1 minus 2i is there. So it is the method of taking the addition of two complex number. Similarly, we have to subtract them. इसका subtraction ले सकते हैं अपन। Same method से अपन क्या करेंगे, इसका subtraction of two complex number लिखेंगे, है ना, दोनों का same subtraction of two complex number, ये same method है, ये दो नंबर है समझो। तो how to subtract them, same z1 minus z2, z1 में से z2 subtract करेंगे, so what happens now, 4 plus 3i मधून minus 3 minus 5 minus करायचे, तो पहले open the bracket with the minus sign, 4 plus 3i, minus के ऊपर करा, minus minus become plus 3, minus minus become plus 5i. So what you got here, real part 4, real part 3, 4 plus 3 7, imaginary part 3i, imaginary part 5i, 3i plus 5i, you got here 8 is there. Okay, so what is important in that one, addition of two complex number, we get again a complex number. Similarly, while subtracting two complex number, again we got the complex number here. मतलब जब भी हम दो complex number के addition करेंगे तो हमको फिर से complex number मिलेगा, देखो ना, real and imaginary। उसी प्रकार से यदि दो complex number का subtraction करते हैं तो उस समय भी हमें क्या मिलेगा, complex number मिलेगा, real plus imaginary। It is the important in that one। Okay, तो इसमें भी प्रॉपर्टीज थे एडिशन पे। एडिशन की प्रॉपर्टी क्या थी, एकदम सिंपल। पहली प्रॉपर्टी क्या थी कि किसी ने समझो z1 plus z2 निकाला क्या, या फिर z2 plus z1 निकाला क्या, दोनों का मीनिंग सेम। z1 plus z2 फाइंड करो या फिर z2 plus z1 फाइंड करो, एडिशन क्या आने वाली है, सेम। उसी तरीके से पहले क्या किया अपन ने, z2 plus z3 के एडिशन, तो कॉम्प्लेक्स नंबर के एडिशन में तीसरा कॉम्प्लेक्स नंबर मिला है क्या, या फिर पहले z1 plus z2 निकालने के बाद z3 ऐड करेगा, ये दोनों का क्या आने वाला है, एडिशन क्या आने वाला है, सेम। अपन ये प्रूव करके देखा वाला है ना, मास्टर लेक्चर वाले सगळे फाइल ले था अपन ने, इसके नाम भी दिए थे अपन ने। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव, एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। मैट्रिक्स मध्ये झालेले आहेत। This property is said to be the commutative property. This property is said to be the associative property. Next one is the next property is that if there is a complex number and if you add to it 0 then, or 0 plus z1, you got here z1. तो इस complex number में 0 complex number ऐड करेंगे या फिर 0 पे कोई भी complex number ऐड करेंगे तो फिर से अपने उसके बाद next property sheet z1 plus z1 bar is equal to 2 times r of z। म्यूट करा तुमचा, कोणाचा चालू आहे ऑडिओ? ओके, so what is the condition here, z1 plus z1 bar is equal to 2 times r of z। तो इसके लिए जो प्रॉपर्टी का मीनिंग समझ लो, व्हाट इज द प्रॉपर्टी टेल्स अस हियर, according to this property, suppose there is a one complex number z1 is equal to 4 plus 3i, then z1 bar means what, z1 bar means conjugate। इसका conjugate क्या है,
Z1 bar conjugate सांगा 4 minus 3i. Okay, now add these two Z1 और Z1 bar की एडिशन, तो क्या मिलेगा आप देखो 4 plus 3i की एडिशन 4 minus 3i के साथ. So maybe always imaginary part gets cancelled and we got here 4 plus 4, it is nothing but 8. 8 means it is nothing but 2 times 4 and 4 is nothing but 2 times real of z. नाही कळालं हे बघा प्रॉपर्टी काय चौथी, there is a complex number and if we add conjugate of complex number then we got 2 times real of z. तो देखो यहाँ पे एक complex number z1 is equal to 4 plus 3i, इसका रियल पार्ट बोलो, रियल पार्ट कितना है 4. ओके, इसका कॉन्जुगेट क्या है z1 बार 4 एज इट इज प्लस का माइनस 3 आहे. एडिशन केली तर 8 आला. 8 ला आपल्याला काय जाईल 2 गुणिले 4, 2 गुणिले 4, 4 हा काय त्याचा रियल पार्ट आहे, म्हणजे काय भेटला त्याचा रियल पार्टचा काय भेटला दुप्पट भेटला. जसं की आता फॉर एक्झाम्पल मी तुम्हाला सांगितलं कॉम्प्लेक्स नंबर घेतला 3 minus 2i, तरी तुम्हाला काय भेटणार 3 plus 2i. एडिशन सांगा, डायरेक्ट सांगते तुम्हाला z1 plus z1 बार हा काय असेल रियल पार्टचा डबल भेटणार, म्हणजे किती आहे रियल पार्ट किती आहे 3 आहे, तर आपल्याला एडिशन करून किती भेटणार 6 भेटणार, नेहमी दुप्पट भेटेल. म्हणजे कसं z1 plus z1 बार एडिशन केली तर 3 आणि 3 6 minus 2i plus 2i gets cancel. 6 means what, it is nothing but twice of 3. 3 का डबल और 3 क्या है रियल पार्ट ऑफ दैट वन. सो इट इज द प्रॉपर्टी. एखाद्या कॉम्प्लेक्स नंबर मध्ये त्याचा कॉन्जुगेट ऐड केलं तर ऑलवेज यू गॉट हियर 2 टाइम्स ऑफ रियल नंबर ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर. जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके रियल पार्ट का हमेशा क्या मिलेगा डबल मिलेगा. उसी तरीके से लास्ट प्रॉपर्टीज में कि z1 माइनस z1 बार जर केलं तर याच्यामध्ये 2 रियल ऑफ z मध्ये त्या कॉम्प्लेक्स मधला रियल पार्ट चा डबल. सिमिलरली एक काय भेटतो तुम्हाला 2i ऑफ z, याचा अर्थ काय त्या कॉम्प्लेक्स नंबरचा इमॅजिनरी पार्टचा डबल याचा भेटेल. कसा बघा एक्झाम्पल किती घेऊ आपण 7 plus 11i. ठीक आहे, सांगायचं कॉन्जुगेट किती 7 minus 11i. सबट्रॅक्शन करूया आपण. सबट्रॅक्शन केलं तर z1 मधून z1 बार मायनस केलं तर काय भेटणार 7 plus 11i मधून 7 minus 11i मायनस, तर काय भेटणार बघा 7 plus 11i minus 7 minus minus become plus, plus चा 7 cancel with the minus 7. 11i plus 11i किती आहे 22i. What is the imaginary part 11. तो यहाँ पे क्या मिला 22 डबल दुप्पट this one. It is a property. If there is a complex number and if you subtract the conjugate of complex number from this one, ये complex number में से अगर से इसका हम conjugate subtract करेंगे तो हमेशा क्या मिलेगा आपको को imaginary part का डबल. imaginary part क्या रहा है तो अपने समझ में आना चाहिए. आंसर कितना आएगा 22i. इसका क्या पता है. This is the last property of this one. I hope you got that one. तो इसके बाद addition of two complex number, then similarly subtraction of two complex number. So now we proceed to the multiplication of two complex number. Okay, so how to multiply two complex number. Here now it is important one. So next we did the multiplication of two complex number. Multiplication of two complex numbers. So see now what is the procedure and what is the process of multiplying the two matrices here. So how to multiply this here now by taking one example. Example तो बताएंगे. समझो example complex number है z. z वाला complex number है. आपल्या मनानुसार काय घेता येईल 4 plus 3i. Another complex number z2 is equal to 2 minus 5i is there. Now we want to multiply these two complex number. Now we want to multiply these two complex number.
So what we got here? See it now. Z1 into Z2. Z1 की जगह पे Z1 का पहला कॉम्प्लेक्स नंबर, Z2 के प्लेस पे Z2 का कॉम्प्लेक्स नंबर. So how to multiply that one? 4 is multiply with the first bracket, 3i is multiply with the second bracket. नेमी के जैसा हमेशा करते हैं ऐसा. 2 minus 5i plus 3i into 2 minus 5i is there. Now multiply. 4 2s are 8 minus 20i then plus 2 3s are 6i minus 5 3s are 15. 5 3s are 15. I into I square is there. So we got here 8 minus 20i plus 6i minus 14i. Now you know that this is the I square. This is your I square. Now tell me what is the value of I? The value of I is equal to under root of minus 1. So I square is equal to minus 1 is there. It is the value of I square. So replace that I square by minus 1. So what happens now here? So it becomes, replace I square by minus 1. So it becomes minus 1 is there. So what happens now? 8 minus 14i minus minus become plus 15 is there. So finally we got the condition. 8 is the real part, 15 is the real part. तो पहले रियल पार्ट कंडीशन 15 और 8 कितना 23 minus 14. So it is the answer, or it is the method of doing the multiplication of two complex number. Okay, what is how to find the multiplication? Multiply with this 4 by 2 minus 5i first, then second term with this bracket. After multiplication you got here 4 to the right, 4 pi is a minus 20i, 3i into 2 6i, then plus minus minus 3 pi is a 50, I into I square is there. Now what is the value of I square? It is nothing but minus 1 is there. So this minus minus become plus 15. Okay, then 8 is a real part, 15 is a real part, 15 आणि 8 म्हणजे झाले 23 आणि इमॅजिनरी पार्ट काय राहिला -49 as it is. म्हणजे दोन कॉम्प्लेक्स नंबरचा मल्टिप्लिकेशन घेऊन पुन्हा आपल्याला काय भेटणार कॉम्प्लेक्स नंबर रियल आणि इमॅजिनरी. ओके, कळलं असेल तर ठीक आहे, नाही तर अजून एक्झाम्पल घेतो. समजा दोन कॉम्प्लेक्स नंबर घेते म्हणून suppose we have taken again two complex number here. One complex number is something like to me. तुमचा मानुसार काय घेतले आपल्याला काय घेऊ 3 minus 2i and then 4 minus 4 plus 7i is there. Okay. Now we have to multiply these two complex numbers. So what is the procedure? Z1 into Z2. 3 minus 2i into 4 plus 7i. तर कसा मल्टिप्लाय करते पहिला नंबर ने पूर्ण ब्रॅकेटला त्यानंतर -2i ने पूर्ण ब्रॅकेटला 4 plus 7i ला. ओके, फर्स्ट नंबर से पूरे ब्रैकेट को -2i से पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई 3 4s are 12. It is nothing but 21i. Then afterward minus 4 2s are 8i minus plus minus 7 2s are 14i into I square is there. Now सर स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही. Yes, anybody have problem? 12. Now it becomes 21 में से 8 आ गया तो कितना मिला? It is how much
कितना 39। सर हाँ बोलो। स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही, किसी ने आपको पॉज कर दिया है। सर स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही है सर। ओके ओके ठीक। यस नाउ अब आप दिख रही क्या? यस कैसा लगा था? हेलो। हाँ अब दिखाई दे रहा है। ओके चलो, तो कहां तक आए? यहां तक आगे क्या समझ में? इतना अलग अलग क्वेश्चन। सर ये फिर से बताइए ना। ओके सी नाउ, कोई बात नहीं, सी नाउ। While doing multiplication of two complex number, first number is स्क्रीन नहीं multiplied with दिखाई the दे रही full है सर। bracket. You got here 3 into 4 plus 7i. Then second element minus 2i स्क्रीन अभी भी नहीं दिख रही है सर। into 4 plus 7i. नो क्या लगा? हम्म, सर स्क्रीन अभी भी नहीं दिख रही है सर। ये तो नजर आ रही सबको, यहाँ तो मेरे लैपटॉप पे तो नजर आ रही। और किसी को प्रॉब्लम? हाँ सर, किसी ने आपको पॉज कर दिया है। पॉज कर दिया? ऐसा नहीं होता, बीच में कैसे करें कोई पॉज? तो हम तो चेक किया। इसके तो चालू है। यस, और किसी कोई प्रॉब्लम? कोरोना का एक्शन नहीं करो होता, डिसाइड लगा था। यस टेल मी नाउ, डिसाइड लगा। ओके नाउ, आता क्या प्रॉब्लम है का? अभी दिख रहा है क्या सबको? यस, दिख रहा है क्या सबको? हेलो हेलो, यस, इज देयर एनी प्रॉब्लम? हेलो, ओके डिसाइड लगा था, डिसाइड सगळे ना हो नाही कधी सांगा ना बाबा. हेलो, ओके सो वी कंटिन्यू हियर द नेक्स्ट पार्ट. सगळ्यांना दिसते का स्क्रीन? स्क्रीन दिसायले का? हेलो, give the message of that one. यस, दिसायले का आता? दिसतो का सगळ्यांना? बघा दिसायले सगळ्यांना? हेलो, okay, see now how to multiply these two matrices here. It becomes 3 powers of 12 plus 7 3 the 21i here, and then here 21i minus 4 to the 8i
plus 7 to the 14 I into I square is there. Okay, I hope you got that one. Now you proceed to the next part of that one. It is nothing but 1 minute. Okay. So here it is nothing but 21i minus 8i, it is 39. So you got here 39 is there. And then here 14 I square is nothing but minus 1 is there. So finally we got the number here 12 plus 13i, it is nothing but minus 14 is there. So 12 minus 14, it is nothing but, what is the complex number you got here? 12 minus 14 minus 2 plus 13i is there. It is our complex number. Okay, means multiplication of two complex number, again we got a complex number here. I hope you got that one. First number is multiplied with the whole bracket. The second number is multiplied with the whole bracket. After multiplication, here the important term is that the value of I square is replaced by minus 1. So this minus plus become minus 14. Real part 12 minus 14. 12 में से 14 गया minus 2.